Good evening, kids. We are going to discuss the 23rd January Shift 1 JEE Mains 2025 paper. The paper यहाँ पे पेपर लेंदी एंड टफ है. अगर यहाँ पे आपको अराउंड 50 या 50 अराउंड 55 मार्क्स मिले तो इट विल कम इजीली 99% है. कुछ डरने का जरूरत नहीं. जो भी ये पेपर दे चुके, पेपर इज लेंदी एंड डिफिकल्ट. तो आप आराम से बाकी JEE मेन सेकेंड या एडवांस प्रिपेयर स्टार्ट कर सकते हो, जिसका भी मार्क्स 50 से ज्यादा है, 99% and for 100% I'm not sure, maybe around 70 or 80 it will be there like that. And जो भी शिफ्ट 24th को लिख रहे, 24 नेक्स्ट अगेन बाद में 28 29, हाँ एक क्वेश्चन कौन सा भी रिपीट नहीं हो रहा है. तो ओनली जस्ट एक बार देख लीजिए, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं, जस्ट एक बार देख लीजिए, दैट बी सफिशिएंट. बाकी जो भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूलास आए उसको रिवाइज करें, दैट विल बी मोर एडवांटेज. कंप्लीट पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट यू शुड हैव ए ग्लैंस व्हाट लेवल दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर आस्किंग, बिकॉज नन ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड. अब तक जो भी शिफ्ट हो चुके चारों पेपर लगे 24th कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला है, और 28 29 को कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला है. This is very important. Paper is tough, lengthy. No need to worry. Those who have got 40, 45 marks, no need to worry. Okay, I'll start the paper. Good evening, बच्चों. We are going to discuss the JEE Mains 2025, 23rd January, Shift 1. मैं आपका श्रीधर सर, फिजिक्स लेक्चरर. पेपर के बारे में, पेपर इज लेंदी एंड टफ. अगर यहाँ पे आपको अराउंड 50 to 55 मार्क्स, दिस विल बी फॉर 99% है ना. और मैंने सुना है कि इवन चेक्ड इट, मैथ्स भी लेंदी है. सो यहाँ पे थोड़ा आपका टोटल स्कोर बहुत कम होगा, एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर 99%. आई थिंक दिस विल बी द टफेस्ट सेशन अब तक जो भी हो चुका है. दिस इज द टफेस्ट सेशन. 22 23 में चारों पेपर में, चारों शिफ्ट में, दिस इज द टफेस्ट शिफ्ट. देखेंगे कल 24th में क्या होगा और बाद में 28 29 में. सो विल स्टार्ट विद द पेपर डिस्कशन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन, इन द गिवन डीसी सर्किट फाइंड द करंट थ्रू 12 ohm resistance at steady state. यहाँ पे steady state means at t equal to infinity. So जहाँ पे भी इंडक्टर है at steady state, it will behave like a short circuit. और जो भी बचता है सर्किट में ओनली वो रेजिस्टेंस, करंट I will flow. यहाँ पे 12 volt. So what is I is equal to 12 by R. और से लेके अप्लाइड हो EMF E by R. 12 by 12. So ये हुआ 1 ampere. Okay, this will be 1 ampere. So steady state means जहाँ पे भी इंडक्टर है उसको like you are going to replace with a short circuit. इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं. At t equals 0, it will become open circuit. यहाँ पे क्वेश्चन at steady state पूछे, so that is at t equal to infinity. Very easy question. Like what is the name of chapter? Chapter का name है electromagnetic induction RL circuit, growth and decay of RL circuit. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. ये तो सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट. We have to calculate find the position of center of mass of uniform disk of radius with respect to previous origin if small disk of radius 5 centimeter is cut. ये जो डिस्क है इसमें से हम इसको ओल बना रहे हैं.
जब all होने के बाद what is the center of mass of the disk with all? ए वाला शेडेड वन, ए वाला ओ रहे, छेद बोलते हैं ना हिंदी में, हम या जिसमें छेद बना रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लगे विल एज्यूम वन डिस्क विदाउट ओल, देन इसमें हम अनदर डिस्क ऑफ नेगेटिव डेंसिटी, इसका रेडियस कितना हुआ आर, ए वाला हम स्मॉल आर कर लेंगे, दिस इज द डिस्क विदाउट होल, और ए जो है दिस इज डिस्क विथ, इसका मास कितना है नो m1, इसका मास कितना है m2, इसका डेंसिटी होगा सिग्मा, इसका डेंसिटी होगा माइनस सिग्मा। इसका मास कितना m1 मास फाइंड आउट करेंगे, m1 का मास हुआ सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, m2 का मास कितना है माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। सो फ्रॉम with respect to if the small disk, find the position of center of mass of with respect to this a वाला origin है ना, इसको हम डिफाइन करेंगे। सो अगर ये आप इस तरह ले लेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, इसका m1 तो मास यहीं पे रहेगा और m2 का मास यहाँ पे है, सो रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में हम ओल का डिस्टेंस कितना है, सेंटर ऑफ द ओल इज एट अ डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द ओल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 15 सेंटीमीटर, देन यहाँ पे हम m1 एंड m2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन व्हाट इज द फॉर्मूला xcm इज इक्वल टू m1 इंटू 0, इसी को हम ऑरिजिन ले रहे हैं, द सेंटर ऑफ दिस इटसेल्फ इज ऑरिजिन, ए वाला ओल और ए डिस्क विदाउट ओल, नो द फॉर्मूला विल बी m2 इंटू 15 बाय m1 प्लस m2 माइनस m2 का वैल्यू कितना है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर 15, m1 का वैल्यू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा पाई एलिमिनेट हो जाएगा, 15 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर, इसका वैल्यू 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करेंगे विल गेट -1 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, लेकिन सर इसका नेगेटिव नेगेटिव कहां से ले रहे, तो व्हाट इज m2 का वैल्यू इस तरह लिखते हैं हम, नेगेटिव डेंसिटी पाई आर स्क्वायर, मास विल बी नेगेटिव, ए वाला डिस्क विथ नेगेटिव डेंसिटी अगर यहाँ पे आप रख देंगे, देन वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, अगला क्वेश्चन ले लेंगे, the ratio of electric force to gravity between two particles having q and mass respectively, रेशियो यहाँ पे दो पार्टिकल है, ए वाला हुआ पार्टिकल m1 m2, इसका चार्ज q1 एंड q2, separation is r, what is the electrostatic force fe, a हुआ electrostatic force, this one will be gravitational force, तो ये तो कुलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स Fe by Fg, Fe का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू विल बी Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल का फोर्स G m1 m2 बाय 4 पाई r स्क्वायर, ओनली r स्क्वायर, सो यहाँ पे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G m1 m2, ऑप्शन 4 दिस विल बी ओके। तो चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन, सिंपल ना, ये तो आई थिंक हर एक को पता होगा, लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है,
ये तो कुलम्स लॉ है। से इसलिए मैं बच्चों से लेके जो भी लिख रहे शिफ्ट 24 एंड नेक्स्ट 28 29, आप एक बार जितना होता है उतना पढ़ रिविजन कर लीजिए, देन सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक नथिंग विल हेल्प यू। इससे पढ़ने से बहुत फायदा है। हाँ, सब कुछ भी नहीं है, लाइक देयर नथिंग कॉल लाइक 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बदले आप पढ़ लीजिए ना सर, लाइक ये तो सिंपल कुलम्स लॉ है, जस्ट देखिए। ये तो ग्रेविटेशन, इसके लिए आप नो नीड टू सॉल्व एनी पेपर, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास थोड़ा याद रहे तो मैनेजेबल। प्लीज गिव प्रायोरिटी टू द लर्निंग। हाँ, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आप सुधरोगे नहीं। दिस इज अ वेरी सिंपल गाइडेंस आई वांटेड टू गिव। जिसका भी 28 29, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम लोगों को, जितना होता है उतना रिवाइज कर लो, नो नीड टू सॉल्व एनी पेपर। अगला क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन सर्क्यूट। सो यहाँ पे सर्क्यूट ले लेंगे, सेल है, एमीटर, दो रेजिस्टर्स है, यहाँ पे एक डायोड दिया है और ये 4 ओम रेजिस्टर्स है। देन क्या क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, लाइक करंट, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसका पोटेंशियल कितना है और इसका पोटेंशियल कितना है। देन दिस टॉपिक बिलोंग्स टू सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। यहाँ पे हम कितना वोल्टेज डाल चुके हैं, 6 वोल्ट। पहले हम एक काम करेंगे, देखिए ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। V1 V2 सभी पूछ चुके हैं। तो देन इट विल बी सर्क्यूट, यहाँ पे ऐसे डाल लेंगे ये रजिस्टर। यहाँ पे जो डायोड है दिस विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो गए तो देन उसको हम शॉर्ट सर्क्यूट बोलते हैं, आइडियल डायोड। एंड ये रजिस्टर कितना, 4 ओम, 4 ओम, ये वाला 4 ओम, 6 वोल्ट है। 4 ओम 4 ओम पैरेलल 2 ओम, ये पे 4 ओम। सो यहाँ पे V1 V2 और एक सर्क्यूट बना लेंगे। सो दिस विल बी 4 ओम, ये 2 ओम, दिस 4 ओम। पोटेंशियल डिवाइडर अगर याद रहे तो टेक हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, वरना राइटिंग लूप इक्वेशन से भी कर सकते हैं हम। नो, V1 का वैल्यू कितना, 6 into 4/4 + 2, दिस विल बी 6 into 4/6, इसका वैल्यू 4 वोल्ट। V2 का वैल्यू विल बी 2 वोल्ट। करंट यहाँ पे कितने फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू 6/4 + 2, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट है, V2 2 वोल्ट है, V1 4 वोल्ट। यहाँ पे करंट, वोल्टेज एंड V1 V2। सो यहाँ पे ऑप्शंस हमें 1 एम्पियर करंट, V1 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये वाला होगा ऑप्शंस। सो सर लगे अब इस डायोड, व्हाट वी आर डूइंग विद द डायोड, डायोड इज फॉरवर्ड बायस। जहाँ पे डायोड है उसको हम शॉर्ट सर्क्यूट बोल रहे हैं। सो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डायोड, यहाँ पे जो भी डायोड है इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। एंड फॉरवर्ड बायस्ड डायोड क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस्ड डायोड में इफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस वी कैन रिप्लेस दैट विद ए शॉर्ट सर्क्यूट। जहाँ पे डायोड था उसको हम शॉर्ट सर्क्यूट से रिप्लेस करते, फॉरवर्ड बायस डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिप्लेस्ड विद शॉर्ट सर्क्यूट। अगला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द क्वेश्चन इंडक्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन,
What is the self-inductance का formula है? Mu naught n square s by L. So coil एक सोलोनॉइड को ही हम एक टेक्निकल अलग एप्लीकेशन नाम दे रहे हैं, उस दैट इज कॉल्ड एज ए इंडक्टेंस. Self inductance of a coil, actually the question should be like this, of a coil depends on. So what is small capital N number of turns? A L, and this one will be R. यहाँ पे S means pi R square. And it also depends upon the medium. अगर यहाँ पे आप एक फेराइट रॉड रखेंगे, मैग्नेटिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, देन सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा. इट विल बिकम म्यू नॉट म्यू आर n square s by L. Mu r will become relative permittivity of this ferrite rod. It will increase by mu r times. So यहाँ पे equations formula देख लो. This mu r depends on medium. ये जो yellow color, this is the medium. Ferrite rod, इसको हम ferrite rod बोलते हैं. Ferrite rod और medium. इसका मीडियम का इफेक्ट ए वाला क्वांटिटी लाइक इंपैक्ट करेगा. म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं हम. देन नंबर ऑफ टर्न्स, ए सब तो ज्योमेट्री, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, ज्योमेट्री, एरिया ऑफ क्रॉस ज्योमेट्री, लेंथ ज्योमेट्री. सो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं लेके सेल्फ इंडक्टेंस क्या कंक्लूड करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम प्रॉपर्टी. और क्या इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, like a steel, ferrite, iron, magnetic, non-magnetic substance. Based on that, the mu r depends on this medium. So इसके property of medium बोलते हैं. Very simple. Again, once again, ये जो भी पूछ रहे हैं, this also based on the definition. अगला क्वेश्चन दे देंगे. The circuit shown in the circuit is closed at t equals 0. Choose the incorrect option. At t equals 0, पूछ रहे. So then at t equals 0, what is the state of this one? यहाँ पे हम सर्किट बना लेंगे. ये वाला कैपेसिटर स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं. देन जहां पे भी कैपेसिटर है, इट विल बिकम शॉर्ट सर्क्यूट. दिस इज द कैपेसिटर. ये जो कैपेसिटर था ना, उसको हम विल रिप्लेस एट t equals 0, इट विल बिकम शॉर्ट सर्क्यूट. एंड द करंट जो फ्लो होता है ना, उसको I naught equal to how much will be E by R. यहाँ जो कैपेसिटर वोल्टेज है, what is the voltage? Will be 0. यहाँ जो current flow है, this is maximum. And the equation for current at any time, this is the equation. And voltage का equation इस तरह आता है. So choose incorrect options बोल रहे हैं. Current in the circuit is 0. No, current in the circuit is maximum. Voltage across capacitor is minimum at t equals 0. Current in the circuit is maximum. ये वाला हुआ correct. Voltage across resistance is maximum. This is correct. Current in the voltage across capacitor is minimum. Current in the circuit is 0. Current in the circuit तो ये तो okay. Voltage across the capacitor is minimum. 0 को minimum नहीं बोल सकते ना. This is also correct. Huh? Current in the circuit is 0. No, it's a non-zero, so this is a wrong option.
Okay, this will be your wrong option. Wrong option के बारे में पूछ रहे हैं, incorrect. This concept क्या है? Like a RC circuit, resistor. So ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, resistor, capacitor, RC circuit, growth and decay of charge across the capacitor. अगर ये सब formulas हैं, and this is also based on simple formula. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. If two dipoles moment are placed action, find the net electric force which feels by the point unit charge at point P. यहाँ पे एक चार्ज है. Then what is the net force experienced by it? यहाँ पे दो डाइपोल है. What is the field produced by the dipole 1? Dipole 1 तो field ए वाला तो डाइपोल है. It will produce field in this direction, and a first dipole will produce field in this direction. So what is the basic idea? यहाँ पे idea is problem is like this. सिंपल सर्किट बना देता हूं. ये जो डाइपोल है P is a dipole 1. A dipole 2. This will produce field in this direction. Because इसके लिए डाइपोल 2 के लिए ये जो ये लाइन है ना, this will become axis. On the axis, what is the electric field in the direction of dipole? और डाइपोल 1 के लिए ये वाला होगा बाइसेक्टर. और पॉइंट चार्ज किधर है? ऑन द बाइसेक्टर. ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल फील्ड विल बी अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट. E1 इस तरफ होगा. तो ये वाला E1, यहाँ पे हमें पॉइंट चार्ज है. सेम दोनों का डाइपोल मोमेंट. सो E2 नेट फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. दिस विल बी E2 माइनस E1. E2 का वैल्यू 2kp r cube. This will be kp r cube. Resultant will be kp r cube. Then the force कितना हुआ? Q. यहाँ पे पॉइंट चार्ज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम. सो व्हाट इज द नेट फील्ड? जहाँ पे पॉइंट चार्ज है वहां पे नेट फील्ड कितना है? E. दैट उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. सो इक्वल टू Q इंटू kp बाय r cube. Find the net electric force which feels a point unit charge. Unit charge का वैल्यू कितना है? Q इक्वल टू 1. सो कितना हुआ ना? kp बाय r cube. This will be your option. हाँ, what is the concept सर लिखे? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल based on it. So problem ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर आपको थ्योरी में पकड़ है तो देन दिस पेपर इज वेरी इजियर. आप बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो भी करते हो, वेस्ट ऑफ टाइम. Then ito thermodynamics, the concept, the problem is based on thermodynamics. Adiabatic constant of gas is 3/2. If volume of gas initially at 0 degrees is reduced to 1/4 of the original volume, the new temperature is 0 degree. Means initially what is the temperature? Is 0 ka temperature initially will be 273 Kelvin. नया temperature में at what temperature the volume reduces to 1/4 of the original. Initial volume कितना है? V0. Now this will become V0 by 4. V1 का initial volume V0. अब इसका final volume कितना होगा? V0 by 4.
is reduced to 1/4 of the original volume. इसका न्यू टेम्परेचर पूछ रहे हैं. So then directly T1 V1 gamma minus 1 equal to T2 V2 gamma minus 1. T1 273, इसका वॉल्यूम V0. एक काम करेंगे हम, इस तरह इक्वेशन पहले सिंप्लीफाई करेंगे. T1 V2 का वॉल्यूम कितना, V1 का वॉल्यूम V1, V2 विल बी V0 by 4, गामा विल बी 3/2 minus 1. T1 का वैल्यू कितना है, 273. 273 4 to the power of 1/2. तो T2 का वैल्यू कितना होगा ना, 273 by 2 minus 1. Okay, this 1/2. 273 into 2. तो ये हो गया 546 केल्विन. दिस इज ऑप्शन. आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो फाइन, फिर वेरी इजी. एडियाबैटिक प्रोसेस, P1 V1 P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, देन T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल T2 V2 गामा माइनस 1. अगर ये आपको ये सारे फॉर्मूला से याद रहे तो यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन. बिना ये फॉर्मूले यहाँ पे हाईली इम्पॉसिबल टू सॉल्व. जस्ट बेसिक बेसिक थ्योरी आपका टीचर नोट से एक बार निकाल के पढ़ लो, बस रिवाइज कर लो एक बार, कंप्लीट जितना होता है उतना. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. This thermodynamics very important. The basic process, polytropic process, isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric, then polytropic process. उसका जो formulas है, just read once, will be easy for you. Next one, if given a convex lens of refractance in a liquid of refractance given, having radius of curvature R1, R2, and R2 surface silver variation of the plane of so that real and neutron is formed at the same place. यहाँ पे हम पहले काम करेंगे, लेंस को ड्रॉ करेंगे. सिल्वर लेंस इट इज. देन यहाँ पे लेंस, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन एग्जाम यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ डायग्राम, बिना डायग्राम भी तुम कर सकते हो. मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आई एम ड्रॉइंग डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्ट. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2. इसका सराउंडिंग मीडियम यहाँ पे वाटर है. इन ए लिक्विड, कंप्लीट एवरीथिंग, देयर इज अ लिक्विड. वेरी गुड क्वेश्चन. रे ऑप्टिक्स में दिस वन ऑफ द लेंस के silver lens immersed in water. Little bit some concept है, that also I'll explain. Now ये पूछे कि ना अगले शिफ्ट के लिए आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगेन दिस क्वेश्चन विल नॉट गेट रिपीटेड. नो, ये आइडिया भी रिपीट नहीं होगा. सराउंडिंग मीडियम कितना है, μ1. रेडिया इसका R1, इसका R2. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं. Where should an object be placed so that the image should be formed at the object itself? No, this surface is silvered. No, bina, like if the silver lens is there in air, okay, we are done. Now this lens is silvered and immersed in water. What is the basic formula for this? This we have to derive. अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपका टीचर इसको पढ़ा रहे तो फॉर्मूला याद रहे तो डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला यू कैन मैनेज, और इसको डिराइव करना पड़ता है. Now this is equal to
दिस एवरीथिंग, इसको हम स्प्लिट करेंगे. ये वाला होगा नाउ लेंस प्लस मिरर. अगर मिरर को आप लिक्विड में इंसर्ट करेंगे तो देन ऑल्सो it will be same. Its focal length will not change, but lens not like that. When surrounding medium other than air, its focal length will be different. Okay, this is the lens. Now इसका focal length FL पता नहीं. This will be FM. इसका radius of curvature कितना R2? ये वाला R2, ये हुआ mu2. Surrounding medium mu1, ये mu1. तो पहले focal length of the lens find out करेंगे. 1 by FL. It should be equal to mu of lens by mu of surrounding medium by 1 by R1 minus 1 by R2. Mu2 mu1 minus 1 R2. So 1 by effective. In दोनों को हम we are going to replace with a one mirror. इसका focal length F. इसको हम find out कर रहे हैं. Agree this? So 1 by F equal to 1 by FM minus 2 by FL. So FM का value कितना है? FM का value will be minus R by 2. So this will become minus 2 by R. Now why negative? Because it's a convex, it's like a concave mirror. Minus, this will be 2, 1 by FL. So mu2 by mu1 minus 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, this will be R2 होगा. So 1 by F is equal to, so minus 2 बाहर आ जाता है. So R2 plus mu2 by mu1 R1 plus R2 by R1 R2. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है. पर बाद में like is asking for that real and inverted image is formed at the same place. Means हम इसको completely एक मिरर से रिप्लेस करेंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, सो इट शुड बी देयर एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. देन इसके लिए तो वेर यू हैव टू कीप इट सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन ए वाला विल बी 2R. सो 2R डैश बोल दीजिए इसको, R बोल दीजिए. So what is F equal to now? F equal to will be R by 2. F का वैल्यू विल बी R by 2. हमें यहाँ पे 1 by F पता है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं. सो व्हाट इज आवर आंसर विल बी, एक काम करेंगे, x, what is x? X should be equal to 2R. Then we know F should be equal to R by 2. R equal to कितना? 2F. So कुल मिला के this will be 4F. F का वैल्यू हमें पता है. F will be इसको बड़ा इक्वेशन है, ऑप्शन भी उसी तरह दिया है. सो विल सिंप्लीफाई इट. 4 into F will be 1 by 2 mu2 by mu1 minus 1 R1 plus R2 by R1 R2. इसको सिंप्लीफाई 4 by 2 will become 2. और 2 ये वाला होगा mu1
R1 R2 whole square divided by this will be mu1 R2 mu2 minus R2 mu1. पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे. Simplification, I'll simplify it. 2 पहले डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे. So this will be 1 by R2 mu2 minus mu1 R1 plus R2 mu1 R1 R2. इसके बाद में ये mu1 R1 R2 होल स्क्वायर mu1 R1 R2 प्लस R2 R2. इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो 2 mu1 R1 R2 होल स्क्वायर mu1 R1 R2 mu2 R1 R2 mu2 R2 square mu1 R1 R2 minus mu1 R1 R2 square. Okay, this is the answer. सिंप्लीफिकेशन लेंदी है. ऑप्शन के लिए इतना तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट इज सेम. कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. अगर सराउंडिंग मीडियम यहाँ पे एयर है तो इफ सराउंडिंग मीडियम जो भी है इफ इट दिस वाज एयर देन ये म्यू1 सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं रहता है. तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ मीडियम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. ओके, एग्रीड. ओनली दिस थिंग व्हिच यू हैव टू बी अलर्ट. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. What is the dimensional formula of torsional constant? Torsional constant. So this is the where is the like a torsional oscillations. Topic name: simple harmonic motion. Tau is equal to say something like c बोलते थे, c into theta. A वाला हुआ torque. This is called like a torsional constant, and this is the angular displacement. Or torsional constant will become torque by theta. Torque, what is the torque? Torque will be force into distance. Force का dimensions m1 l1 t minus 2 और distance का l1. So m1 l square t minus 2. यहाँ पे डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे. टॉर्क का डायमेंशन है m1 l square t minus 2. What about the dimensions of the radian? इसको dimensions 1, no dimensions. Then your answer will be m1 l square t minus 2. आपको टॉर्शनल ऑसिलेशन SHM अगर वो थोड़ा बेसिक थ्योरी याद रहे तो आई थिंक इट्स पॉसिबल. Find the time period of oscillations of the cube which is immersed in this water. इस क्यूब को now it is there in equilibrium.
साइड लेंथ एंड मास इज ऑसिलेटिंग इन वाटर, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस पूछ रहे हैं। देखो इसको हम थोड़ा इमर्स कर देंगे। I'll draw another diagram. Initially cube is floating. यहाँ पे क्यूब फ्लोट हो रहा है। Now slightly will press it into the liquid. इसका लेंथ कितना है? इनिशियल लेंथ इज L और Y। यहाँ पे बाय एंड फोर्स FB नॉट एंड mg, इसको हम फर्दर प्रेस करेंगे। इसका बाय एंड फोर्स कितना होगा? FB एंड mg। तो यहाँ पे वैल्यू FB नॉट, FB naught minus mg equal to 0. Initially this will be a test term. Then जब आप प्रेस करेंगे, extra length x will be immersed. Okay, fine. So bind force यहाँ का फॉर्मूला लिख देंगे। Density of the liquid rho L, water, और density of solid, density of solid का density let it be sigma. Now what is the bind force formula? Density of liquid volume immersed A into Y, G minus mg equal to 0. जब हम प्रेस करेंगे इसको, then this will be the extra volume immersed. So due to this, the bind force will increase. The new bind force will be now FB minus mg equal to ma. What is FB? Density of liquid A y plus x g minus mg equal to ma. यहाँ पे रो L A y g will cancel with this. So बाकी बचे कितना हुआ? ए वाला कैंसिल हो जाएगा ना, रो L y g with mg will cancel out. Then we have to show this rho L G A x by m. Rho L G A. What is m? M to sigma A into L. What is L? Total length of this. The equation, now A also will get cancelled. Rho L G by sigma L into x. So this will be negative sign यहाँ पे डाल देंगे SHM के लिए. So A equal to minus omega square x, इससे कंपेयर कर लो. ओमेगा का वैल्यू rho L G by sigma L. So what is the time period? Time period of oscillations is given by 2 pi by omega. So this, आप एक काम करो, आपका टीचर नोट्स ले लो। जो भी बच्चे 28, 29 शिफ्ट लिख रहे हैं ना, जाके आपका टीचर नोट्स ओपन करो। जो भी इस पेपर में हर एक क्वेश्चन आपको आपका टीचर नोट्स में मिलेगा। देन आप क्या कर रहे हो? तुम टीचर का नोट्स उधर पे के, बाकी जो भी कचरा मिल रहा है इधर इधर, वो कचरा लेके आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। दिस इज अ प्रॉब्लम। आपके टीचर नोट्स में एवरीथिंग विल बी देयर। दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। ये जो पेपर टफ है ना, व्हाट इज द थिंग? ऑल बेस्ड ऑन द बेसिक्स, जस्ट बेसिक्स। जो भी आप पढ़ चुके हो, टीचर पढ़ाए तुम्हें, से लेके सर लेके ये जो क्वेश्चन सर लेके वैल्यूज, द वैल्यूज विल चेंज, बट ये तो कॉन्सेप्ट हर एक टीचर के नोट्स में रहता है। सर आप उतना टीचर को क्यों सपोर्ट दे रहे हो? ना, आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई एम सपोर्टिंग यू ओनली। ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, इसको समझ चुके हो, जस्ट ओनली द वैल्यूज चेंज ना यहाँ पे, बट ये फॉर्मूला तो यही है। जो भी 28, 29, 24 शिफ्ट लिख रहे हो, जाके आप क्वेश्चन यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसका आइडिया आपको मिलेगा। यू डोंट गेट दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन, बट आपका टीचर नोट्स के में सारे के सारे रह जाएंगे। आपका टीचर नोट्स रिवाइज करो, रियली रियली यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड रैंक इजीली।
value substitute करना है. So on substituting this, we'll get this answer, pi by 50 seconds. This based on the atomic structure. ये तो atomic structure है, the very famous Bose atomic model. Based on that, the question is asked. So यहाँ पे what is the formula? Rn equal to n square z, n square z by, okay, that's पहले करना है, topic name लिख देता हूँ. So that's based on the buoyancy, fluid statics, buoyancy, fluid statics and SHM, simple harmonic motion. Based on that, this question is there. What is the expression for radius of the nth Bohr orbit? N square a naught by z. So atomic physics, Bohr's atomic model. So radius of the electron revolving in the ground state of hydrogen atom is a naught. Radius of electron in helium plus ion. A wala helium plus ion, z equal to 2. And electron revolving in third excited state. एक काम करेंगे हम पहले third excited state, n equal to 1 ground, n equal to 2 first, n equal to 3, and this is n equal to 4. A wala n 2 3 4. This first one will call it as ground state. N equal to 2 will become first excited state. This will be third excited. N equal to 4 will become third excited state. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका रेडियस पूछ रहे हैं. सर ये बीच में क्या है? दिस द न्यूक्लियस एंड इसका रेडियस पूछ रहे हैं. So what is Rn formula? N square a naught by z. N equal to 4, 4 square a naught. Helium plus ion. Helium plus ion, z will be 2. 16, this will become 8 a naught. यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है कि a naught by a. Easy. So a naught by a, so will be 1 by 8. This is based on the simple formula. Okay, both atomic model, 7 8 formulas are there. अच्छा तरह थोड़ा रिवाइज कर लो, it'll be easy for you. Next, अगला question. So this is based on the electrostatics Gauss law. Electric flux is related with linear charge density lambda and surface charge density, where alpha and beta are appropriate dimension, the dimensions of beta by alpha. Charge density, linear charge density lambda sigma, इसका dimensions पूछ रहे हैं. So it's just based on units and dimensions only. So electric flux alpha lambda plus beta sigma. Electric flux का dimensions क्या है? E into S. Electric field का dimensions क्या है? Force per charge. यहाँ पे लिख देंगे dimensions. So force का m L1 t minus 2. Charge current will become charge by time. So current का charge का dimensions हुआ AT and area of cross section. This is the area. इसका dimensions हुआ L square. So electric flux का dimensions will be m L cube t minus 3 per ampere. यहाँ पे हम dimensions रख देंगे. Then यहाँ पे lambda is linear charge density. Lambda का dimensions will be charge per unit length. Charge का dimensions हुआ 80 and length का dimensions हुआ L. So इसका dimensions 80 L minus 1. Then charge density, charge by area. तो charge का dimensions हुआ 80, इसका L square. So it will be 80
L minus 2, where alpha and beta are of dimension, the dimensions of beta by alpha पूछ रहे हैं. What will be the dimensions? So the dimensions of now this should be equal to dimensions of this. So what is the dimensions of alpha? Dimensions of flux by dimensions of this. What are the dimensions of electric flux? M L cube T minus 3 A minus 1. Dimensions of linear charge density A T L minus 1. इसका सिंप्लीफाई करेंगे M L to power of 4 T to power of minus 4 A minus square. Dimensions of beta sigma. From principle of homogeneity, the dimensions of this must be equal to this, and the dimensions of this one. No, dimensions will be of beta will be dimensions of flux by charge density. Dimensions of flux, इसका dimensions क्या है? M L cube T minus 3 A minus 1 by sigma. Sigma will be A T L minus 2 M L to power of 5 T to power of minus 2 A minus 2. अब क्या पूछ रहे हैं? बीटा बाय अल्फा पूछ रहे हैं. ये तो ओनली बच गया L. L means displacement. What are the dimensions? No, dimensions of beta by L will be displacement. तो यहाँ पे तुम्हें electrostatics Gauss law इसका background चाहिए. बाद में it is related to units and dimensions. Paper is tough. Why it is tough? Because related to basics. जो भी तुम पढ़े हो वो भी याद नहीं चाहिए. The essential of JEE Mains. JEE Mains के लिए select marks नहीं आ रहे. So many will message me, sir हमें marks नहीं आ रहे. क्यों marks नहीं आ रहा है? Like concept clarity and formula. जो भी पढ़ते हो वो याद नहीं रहे तो then gone. The displacement of a particle as a function of time. Find the dimensions of. Dimensions, इसका तो dimensions कुछ भी नहीं, या तो इसका dimensions कुछ भी नहीं. The dimensions of D should be the dimensions of displacement. The dimensions of A will be L. The dimensions of B का भी L है. Dimensions of C T square should be L. So इसका dimensions हुआ T square. So dimensions of C कितना हुआ ना? L by T minus 2. Dimensions of D will be dimensions of L. Now A, B, C, D पूछ रहे. L, C का dimensions L, T minus 2. Dimensions of D will be L. So L square, T minus 2. शायद दो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे. आई थिंक मेमोरी बेस्ड नो, पता नहीं लगे. यहाँ पे तो दो क्वेश्चंस है यूनिवर्सल डायमेंशंस का. आई थिंक शायद रॉन्ग कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, बट जो भी पेपर मिला है मैं डिस्कस कर रहा हूँ. अब देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन है. आई थिंक नॉट पॉसिबल है. कौन सा तो एक रहेगा यहाँ पे. इनमें जो दो थे मैं दो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. नो, दिस इज बेस्ड ऑन द a small point object is placed at some distance from a convex spherical surface of radius. First, found that image is formed at equal distance from P. If the distance at which object placed from point P is x, then A जो है, this is the medium. This everything is medium.
and बाकी बचे so outside it is area. This question is based on the ray optics, refraction at spherical surface. Chapter name ray optics, subtopic refraction at spherical surface. So यहाँ पे the ray is passing like this. एक और एक दूसरा डायग्राम डाल लेता हूँ. Question based on the reflection at spherical surface. Same diagram. तो बाकी ये जो है this everything is that medium. Then what was the question? Question यहाँ पे लेके object it will go there. Then it will form at the same distance. Then a वाला this will be the normal. इसको हम normal रखेंगे. This distance x पूछ रहे. Then this is the point P object. This is the image. This is the center of curvature. This will become normal. The refractive index of this is mu and this is a. Mu dash or mu a you write it equal to 1. This is the incident wave. This is the refracted wave. And this will also be at same distance. Then what is the formula? Mu refractive index of medium where the refracted ray is present by the distance pi minus mu of the medium in which incident ray is present by PO equal to mu minus mu a by radius of curvature PC. Formula इस तरह याद रखना है. Refractive index of a medium where refracted ray is present by image distance. Okay. Then refractive index of medium where incident ray is present by medium where refracted ray is present minus refractive index of medium where incident ray is present divided by is also based on formula. It's not a problem. ये तो basic formula है. यहाँ पे value substitute करेंगे 1.5 a1 plus x and the direction of incident is taken positive. Incident ray constant will measure from P. So जो भी distance towards right हम measure कर रहे that will become positive. Minus this will be PO, this will be minus x, this will be 1.5 minus 1. It's the radius of curvature r. So this will become 3 by 2x plus 1 by x equal to this will be 1 by 2r. Phi by equal to 1 by 2r. X equal to phi r. This is a formula, refraction at spherical surface formula. से मुझे लगे let me speak openly. बिना पढ़े, बिना हार्ड वर्क, सर मुझे रैंक चाहिए. Not possible. जो भी बच्चे लगे अब तक 4 शिफ्ट हो चुके रहते, जो भी बच्चे लगे अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं है मेंस में, अभी भी टाइम है. लगे जितना होता है उतना रिवीजन कर लो सेकेंड मेंस के लिए. डेफिनेटली आपका 99% हो जाएगा. 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 100 दिन में, द मैजिक विल नॉट वर्क आउट. आपको पढ़ने से होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पेपर्स, कुछ भी काम नहीं आता है. स्पेशली जेईई मेंस. जितना तुम तेरी पढ़ोगे और जितना याद रखोगे वही आपको मेंस में अच्छा रैंक दिलाएगा. पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. आप कॉन्फिडेंस रहे तो तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपको रैंक मिलेगा.
I'll take the next question. Find the distance traveled up to 30 point. Find the, in the given VT graph, velocity versus time graph, find the distance traveled up to 30.5 seconds. So yeah, this is 30.5 seconds. यहाँ पे ले लेंगे. This will be 30.5 seconds. 30.5. No need to write equation. Directly will calculate the area. ये जो area and the VT graph will give the distance covered. Okay, fine. So this distance covered, this will be A wala S1, this will be S2. Trapezium directly. So then height of the trapezium 2 by sum of parallel sides, 200 plus 400. What is S2? S2 will be area of this one, this area. So yeah, this area under this part of the graph will give distance covered for 2 seconds. Okay, fine. So iska height of the trapezium 2, height by 2 by sum of parallel sides, 200 plus 400. Then बाद में ये ले लेंगे. This will be S2. S2 का तो area of rectangle है 400 into 30.5 minus 2 will be 400 into 18.5 or 4 into 1850. This will be 600. Everything this is in meter. Huh? So the total distance covered will be S1 plus S2, 600 plus 4 5 ja 0, 4 5 ja 22, 4 8 ja 32, 32 4 to carry 4,400 plus 600. कुल मिला के this will be 5,000 meter. इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, this will become 5 kilometer. I think शायद wrong entry है, 5 kilometer. This is based on kinematics. ये तो question kinematics. 1D uniform accelerated motion subtopic. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. ये तो based on the rotational mechanics. Rotational mechanics, or you can call this as a rotational motion. Based on the subtopic name is rolling motion. असल है कि इसका कितना like what is the concept? देखेंगे, will solve the problem. Rolling motion और incline आपको याद रहेगा. Two identical ball of mass and radius है. दोनों का mass same है और दोनों का radius भी same है. Both are on the length L. Actually, if balls are rolling without sliding, then find the ratio of square of the speeds when they reach on the ground. कितना height descend होता है? This will descend an height of H1. This will descend an height of H1. Two identical ball of mass. Two identical balls of mass. So then, जब ये balls reach होते हैं ground को, then इसका velocity कितना है? V1. ये ball जब reach होता है, इसका velocity कितना? V2. In the pure rolling, work done by friction is 0. And the normal contact will act like this. The friction will act here. F1. Here normal contact. Mg sin theta 2.
here mg sine theta 1. The friction acting will be F2. Net work done by friction is 0. Then who will do work? Only the gravity. So therefore, we'll conserve the mechanical energy. So this will be mgh1 should be equal to mv1 square plus moment of inertia I omega 1 square. As it is a pure rolling, v1 equal to r omega. So mgh1 equal to mv1 square. Moment of inertia 2 by 5 mr square by 2 v1 square by r square. Simplify करेंगे पहले इसको. This will be m v1 square by 2 m v1 square by 5. तो v1 का वैल्यू कितना होगा ना? 10g h1 by 7. देन v2 का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे ए पे डाल देता हूँ. 10g h2 by 7. v1 स्क्वायर by v2 स्क्वायर पूछ रहे. Then this will become h1 by h2. What is h1? यहाँ पे लिख देंगे sin 30 degree equal to h1 by l. Sin 40 degree equal to, this will become h2 by l. So h1 will become l sin 30 degree, l sin 45 degree, 1 by 2, 1 by root 2. 1 by root 2. This will be your answer. रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, अगर आपको फॉर्मूला से याद रहे तो स्टिल मोर इजियर, वेरी इजीली आप यू कैन ब्रिंग द आंसर. यहाँ पे मैं ओमेगा 1 बीटा. What is the basic concept? This is a concept. Net work done by friction is 0. Therefore, only gravity does work. That's why we are applying this conservation of mechanical energy. किसी एक डायग्राम में आप इक्वेशन से डिराइव कर लो, बाद में सेकेंड डायग्राम में only you have to replace h2 because the speed v1 depends on the h1. v1 depends on h1. So therefore v2 depends on h2. दो बार करने का जरूरत नहीं दिस फॉर्मूला. जो भी फॉर्मूला डिराइव करते हो उसी को मॉडिफाई कर दो सेकेंड डायग्राम के लिए. तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे. Then here this question is, hot water moves faster than cold water. पहले statement 1 will delete. Hot water, what is the density of hot water? The density of hot water will be less than that of cold water. So जब density कम है, then definitely what will happen? It will have the more momentum, because momentum what happen will write mass into velocity. Mass will become density into volume, and this is as usual velocity. Because of less density, then definitely the velocity should be, the volume should be more, and it will have more speed. And this is one basic idea. Or the energy kinetic energy per unit volume, the kinetic energy per unit volume equal to rho v square by 2. The kinetic energy will be constant. Then as you decrease the density, then the speed has to increase. Just based on the theoretical things, no need to bother anything in depth. So statement 1 is true. Soap water have higher surface than fresh water. No, the surface tension of soap water will be less than that of fresh water. I think this is a theoretical information. This is a wrong statement. This is a correct statement. We'll pick up option 3. It's based on the surface tension. What is the concept? The concept involved is surface tension chapter. Surface tension of when you add detergent
surface tension will decrease. So soap water, what happens is, because when we add detergent to water, they'll become soap water. Surface tension will decrease. Fresh water means normal water. This problem based on the work done chapter. Work, energy, power. If force is acting on a particle along line y equal for displacement from 0 to b equal. So what is the basic formula? Work done equal to F bar dot dr bar. You are moving from 0 to 4, 4, that to along the path. पहले इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x square y square I y square j cap dot dx y cap 0, 0, 4, 4. Expansion, this will be x square y square dx plus y square dy. What is the path? Along the path y equal to x. So जहाँ पे भी path, what is the path? Y equal to x. So dy equal to dx. So भी replace करेंगे. X square y square will be x square dx. जहाँ पे भी y square है उसको हम x square बना देंगे. dy will become dx. This will become 0 to 4. Further यहाँ पे simplify करेंगे. X to power of 4 dx 0 to 4. 0 to 4 x square dx. X to power of 5 by 5 0 to 4 x cube by 3 0 to 4. 4 to power of 5 by 5 4 to power of 3 by 3. Okay, total. This will be your answer. Simplified. Now purely some basic concept. Work done by variable force is given by this particular formula. The path is very important because of this y equal to along the line. Work done acting on particle along the line for displacement. This one. We are moving along one specific path. Just that's why जहाँ पे भी y है y को x से x में रिप्लेस करो, dy को भी dx में रिप्लेस करो, बाद में सॉल्व करके लिमिट रख दो, then we'll get the required answer. This will be your answer. Next question. Match the column. ये तो basic thermodynamics question है. When volume change is zero, what process it is? Isochoric process. When pressure is constant, isobaric. When no heat exchange, it will be adiabatic. When work done by gas is equal to heat given, it will be isothermal. Definitions, thermodynamics का definitions. When volume change, when no volume change, इसको तो हम isochoric बोलते हैं ना. When pressure constant, ये तो isobaric process हुआ. When no heat is exchanged, no heat exchange also, this will be adiabatic. Then work done by the gas is equal to heat given to the gas. This will be isothermal. I think this option will match. यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक थियरी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. The topic is based on the thermodynamics. Okay, fine. For thermodynamics, the basic definition: isothermal temp, like a no change in temperature, like a then delta U will be 0, Q equal to W. Then isochoric process, volume constant, work done 0. Isobaric process, pressure constant. Then next, no heat exchange, adiabatic process. Next, if angle of projection for two projectiles are 30, then the ratio of velocities at maximum height. यहाँ पे हम दो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इसका वेलोसिटी u1 थीटा 1, दूसरा वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका वेलोसिटी u2 थीटा 2 एट हाईएस्ट पॉइंट. इसका वेलोसिटी u1 cos थीटा 1, इसका वेलोसिटी u2 cos थीटा 2.
Assume initial velocity of both the projectiles is same. Then the ratio of velocities at highest point का velocity ratio पूछ रहा है. U1 cos theta 1, U2 cos theta. इसका sum ratio. U1 equal to U2. So therefore cos theta 1 equal to cos theta 2. Cos theta 1 root 3 by 2. Theta 1 30 degrees. Theta 2 60 degrees. 1 by 2. So this will be root 3. Based on what? Projectile motion. Kinematics 2D. Next. Two particles are located at equal distance from origin. The position vectors of those are represented by. If both the vectors are at right angle to each other, the value of n. What is the condition for right angle? Dot product should be 0. 2i cap plus 3n j cap plus 2k cap dot 2i cap 2j cap 4p cap equal to 0. I dot I1 4. J dot I think everyone knows vector algebra. I dot I1, then I dot j 0, I dot k 0. बाद में j dot I 0, j dot j 1. j dot j 1 means यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 6n. फिर बाद में j dot k will be 0. This is p. Then k dot I 0, k dot j 0, k dot k ये 1 होगा. So this will become 8p. But यहाँ पे n value पूछ रहे हैं, one value of 1 by n. But हमें p value पता नहीं. But he is telling something. Located at equal distance means magnitude of a equal to magnitude of b. There is a condition given. इसका magnitude कितना है? 2 square 9n square plus 2 square. Magnitudes. Sir, on what basis of magnitude equal ले रहे हैं? They are at equal distance. Distance means magnitude of it. Position vector. Magnitude of position vector is nothing but will become distance. So इसका 2 square plus 2 square plus 16p square. So this will be 8 plus 9n square. This will be 8 plus 16p square. 8 cancel होगा. So n square p square will be 9n square by 16. 3n by 4. P value. P will be 3n by 4. 4 plus 6n, 8. 3n by 4. 4 plus 6n plus 6n. 12n plus 4 equal 0. N equal to minus 1 by 3. My 1 by n पूछ रहे. 1 by n will be minus 3. Magnitude. N can be positive or negative. Okay, this one. So this is about the 23rd shift, morning shift. I think really asked about the basic fundamentals. So paper क्यों tough है बोले तो just asked about the basic fundamentals. तो concept जो भी तुम पढ़ते हो वो clarity बाद में याद रखना पड़ेगा. Then you can manage. So for all the next 24, 28, 29, you have a time. जितना होता है उतना topics revise कर लो. It will really help you. अब तक जो भी पूछ रहे like JEE means all about the basic fundamentals only. एक दो क्वेश्चन है very tough but there will be no use. वो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, ग्रैंड टेस्ट लिखना, मॉक टेस्ट लिखना, नो नॉट जरूरी नहीं है. यहाँ पे आपका टीचर नोट्स है, जाके ओपन करो, जितना होता है उतना रिवाइज कर लो, राइट एग्जाम, शूट शॉट, यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड रैंक. Okay, thank you everyone for your great support.
All the best, all the students who are writing 24, 28, 29. So all the best. And by evening only, because I'll work in college, so not possible for me to upload the paper immediately. So then the 24th by evening only, I'll upload the paper, and the 28, 29 also, for great support. And those who have successfully completed JEE Mains, उन लोगों के लिए we have lot of advanced content हमारे YouTube channel में, ऐप में, web में. जितना होता है उतना आप use कर सकते हैं. It's totally free. Maximum utilize it and try to get a better examination skills, knowledge gain कर लो, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह मार्क्स स्कोर कर सकते हो. All the best, students. Thank you. Thank you. Okay, bacho, this was the 23 January shift 1. So the paper is tough and lengthy. It's not that something it was paper easy tha. Okay, no, it's tough, but it's based on basic fundamentals. जिसका basic fundamental strong है, जो अपने टीचर का notes revise कर रहे हो, I think those students, they will revise this paper, they'll feel easy. Those students बिना रिविजन के जस्ट रैंडम प्रॉब्लम ओए सॉल्व करना और बिना फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो देन डेफिनेटली दिस पेपर इज टफ एंड लेंथी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना आप आपका नोट्स पढ़ोगे, दैट इज एडवांटेज. यू आर इन एडवांटेज पोजिशन. तो स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट, स्टॉप सॉल्विंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीड ओनली योर द बेसिक कंटेंट. जो भी पूछ रहे हैं अब तक जेई मेंस में, बेसिक फंडामेंटल्स you can manage it. So no need to give priority to the something special. Stick on to the basics. Okay, thank you all of you. Thank you for great support. All the best. Good evening, kids. We are going to discuss the JEE Mains 2025, 23rd January shift 2. So we'll discuss the paper. Then in the end, I'll give the opinion. पहले हम paper discuss करेंगे, बाद में इसका ओपिनियन मैं दे देता हूँ. लाइक पेपर टफ या इजी या मॉडरेट, और कितना परसेंटाइल यहाँ पे. तो थोड़ा मैथ्स एंड केमिस्ट्री भी मेरे को थोड़ा आइडिया है. कुल मिला के टोटल परसेंटाइल कितना होता है जेई मेंस, और बाकी आने वाले सेशंस को व्हाट हैज टू बी डन. सो जो भी एग्जाम दिख रहे हैं नाउ 24, 20, 28, 29, what precautions we have to take it. So we'll discuss first the paper. Good evening, kids. So we are going to discuss the JEE Mains 2025, 23rd January shift 2, or the evening shift. So I'm your Sridhar sir, physics lecturer. The paper again, I collected around 23 questions. So paper we can call it as like a moderate paper. Again the requirement. So इसको like अच्छे मार्क्स लाने के लिए what is the क्या जरूरी है, like concepts पढ़ना जरूरी है, reading all concepts, reading all concepts. Then next memorization of formulas, and solving last 6 years PYQ. I think almost जो level है 2003 level, 2000 like a past 6 years average उसका ले लो तुम, the same level of the papers is coming. तो यहाँ पे जो भी अगला शिफ्ट लिख रहे हैं, डरने की कुछ भी बात नहीं. तो जो भी आप PYQ रिवाइज कर रहे हो, this is going to help you a lot. Last 6 years PYQ really game changer. तो we'll पेपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. So the first question, the equation of a traveling wave in a medium is given by y of xt 40 sine. So this is like a kx plus omega t. So we'll compare with the standard equation, y equal to a sine kx plus omega t. This is there in millimeter. What is the wave speed? The wave speed formula equal to coefficient of
minus of quotient of t by quotient of x. This is a formula. Quotient of t value is 600. Quotient of x is 20 into 10 to the power of minus 3. This will become minus 3 into 10 to the power of 4 meter per second. A very comfortable wave speed. So what is the name of topic? The name of topic is wave sign sounder. And subtopic will be traveling wave on its string. So then this is the basic formula. Wave speed equal to quotient of t by quotient of x. Simple. Traveling wave, energy of a wave. These are the equations. Like a 4 or 5 formulas are there, like a quotient wave speed, particle velocity, point and string will execute SHM. Then afterwards, what we are having is like a the intensity of a wave, power of a wave, traveling waves, standing waves. These are some 8 formulas will come. Now also if you revise, very easier. You can manage easily questions coming from this topic. Next question ले लेंगे. In a photoelectric effect, the stopping potential of 2 volt, the work function. Find the wavelength of the incident light. So here we have the some surface, some metal. On this, light is incident. The wavelength is lambda. The work function of this is phi. Then the stopping potential. So what is the basic formula? जो भी यहाँ पे electron eject होता है उसका maximum current K max है. So K max is equal to energy SC by lambda minus work function. Then K max is what? E into Vs. Stopping potential equal to SC E lambda minus work function. Stopping potential value कितना है? 2 volt. यहाँ पे substitute कर लो. 2 SC value 1242 electron volt by this is E. इस तरह यूनिट रख लेंगे. लैम्डा का वैल्यू कितना है? Wavelength, find the wavelength. This word being after minus work function 2.14. तो कंप्लीट जो लैम्डा है, लैम्डा will come in nanometer. 4.14 equal to 1242 by lambda. Divide this, we'll get this one. Nearest answer. यहाँ पे हम थोड़ा nearest ले रहे हैं. And lambda will be nanometer. The unit will be. थोड़ा this word, the conversions थोड़ा याद रख लो. That will be much easier. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. This topic belongs to photoelectric effect. Simple formula. I think अब तक जो भी पूछ रहे हैं, they are photoelectric effect only. The maximum they're asking about the basic formula. Next question. During charging of capacitor 2 microfarad in DC, the displacement current is found to be. Then find the rate of change of voltage with respect to time. What is the formula? Like a potential across the capacitor equal to Q by C. There's a capacitor. Charge Q minus Q. Capacitance will be this one. Here a displacement current will flow. And outside here conduction current. This is a simple diagram. This will be the dropper. Then according to the capacitance concept, V equal to Q by C. The idea of this will be is asking the displacement current, and the displacement current should be equal to conduction current. So we'll differentiate this. dV by dt equal to 1 by C dq by dt. Then what is the dq by dt?
this what dq by dt. Across capacitor, the displacement current should be in the gap between the plates of capacitor, the displacement current will flow. In the wire external to capacitor, conduction current flow, and these two will be equal. So therefore now dv by dt पूछ रहे हैं. So capacitance का वैल्यू कितना है? 2.5 into 10 to the power of minus 6. dq by dt 0.25 into 10 to the power of minus 3. A हुआ 5 by 2, 2 by 5, and this will be 1 by 4. Two one cha, 2 cha, 10. So this will become 100 volt per second. The concept is based on the RC circuit and also the EM waves. Better we can categorize this in EM waves. थोड़ा बहुत RC circuit का आपको idea रहना चाहिए. Then बाद में then the EM waves. The concept is based on the displacement current. What is the subtopic name? Subtopic name is displacement current. The previous one and the answer should be 300. 12 by 4. So it will come around 300. मैं गलती से इसको राउंड ऑफ किया था. दिस बी और आंसर बिकॉज 12 by 4 तो करीब करीब 300 होगा. ओके, अगला वाला ले लेंगे. टॉर्क ऑन ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 2 kg रेडियस इज गिवन एज द पावर बाय द टॉर्क. ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द रोटेशनल डायनामिक्स और रोटेशनल मोशन. टॉर्क के बारे में पूछ रहे. सब टॉपिक नेम इज टॉर्क. So what is the torque? Like a torque is equal to given by 5t square minus 80. Torque equal to I alpha. Moment of inertia of curved disc कितना है? M r square by 2. 2 into 1 square by 2 will be 1. So यहाँ पे तो moment of inertia का 1 है. So 1 into alpha. सिंपल वेरिएबल एक्साइटेड मोशन अगर थोड़ा ये आइडिया रहे तो भी ओके, काफी कैन मैनेज. देन फर्दर डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 80. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. इनिशियली एट रेस्ट एट एनी टाइम t 0 to t. Initially it was at rest, so omega equal to 5t cube by 3 minus 18 to t square by 2. Then हमें ये टॉर्क तो मिल गया. नो फाइंड द पावर बाय द टॉर्क. थोड़ा लकी व्हाट इज द पावर हम इस तरह डिफाइन करते हैं. फोर्स इनटू वेलोसिटी. देन f into x, v by x. So this f into x will become torque, v by x will become omega. For rotational motion, पावर को इस तरह डिफाइन करते हैं हम. लाइक व्हाट इज द पावर? पावर विल बी torque into angular speed. For linear motion, the power will be force into linear velocity. But then the formula will be torque. Torque का वैल्यू कितना है? 5 t square minus 80. ओमेगा का वैल्यू कितना है? एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पूछ रहे हैं. So 5 into 1 square, 8 into 1. इसका टोटल वैल्यू P will be 5 minus 8.
5 minus 12, 7 by 3, or 2 into 5 minus 8, 3. This will be 7, this will be 3. So 7 by 8. 8 पूछ रहे ना, so fine. This is sir negative आ रहा है, okay, no problem. Because retarding torque. Sir, what do you mean by negative sign? Negative sign will be retarding torque. It will be that will decrease the angular speed. Topic is based on the rotational dynamics, based on the idea of the torque. This will be your answer. So what is the formula? Formula ए तुमको ए वाला formula याद रहना चाहिए. For rotating motion, power equal to torque into angular speed. For linear motion, power equal to force into velocity. Okay, fine. Next question ले लेंगे. ये तो very easy based on the electromagnetism chapter. Based on the idea of the conversion of galvanometer to ammeter. इसको हम current density में ले सकते हैं. Moving coil galvanometer converted to ammeter. ये वाला, this is the galvanometer. इसका shunt value is यहाँ पे ammeter range maximum current 3 ampere. यहाँ पे करंट कितना फ्लो होता है, IG. यहाँ पे कितना करंट फ्लो होता है, I max minus IG. गैलोमीटर रेजिस्टेंस इसका 30 ओम है. नाउ ये शंट वैल्यू पूछ रहे. देन द रेजिस्टेंस is नाउ अगर आपको इवन उतना याद नहीं रहे तो कन्वर्शन ऑफ गैलोमीटर, व्हाट इज द सब टॉपिक नेम? कन्वर्शन ऑफ गैलोमीटर टू एमीटर. अगर आपको याद नहीं रहे तो भी ओके, यू कैन मैनेज. सो व्हाट इज द अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो यू कैन डिराइव दिस इन एग्जाम. जहां पे भी करंट एंटर होता है दैट एंड विल बी पॉजिटिव, जहां पे बाहर आता है सो दैट एंड विल बी नेगेटिव. दिस फॉर बेसिक करंट डेंसिटी. यहाँ पे जो हम करंट सेंड कर रहे हैं इसमें से करंट IG अक्रॉस गैलोमीटर पास हो जाएगा, बाकी बचे हुए करंट अक्रॉस शंट वैल्यू इट विल फ्लो. देन दे आर पैरेलल नो, ये दोनों पैरेलल है, इसका ड्रॉप तो इक्वल होना चाहिए. देन IG into G should be equal to I max minus IG into S. IG value, IG का वैल्यू when the current to it is 20 milliampere. कितना करंट पूछ रहे हैं नो? दिस इज द 20 milliampere IG value. So 20 into 10 to power of minus 3. Gallanometer resistance 30. High max value 3. 20 into 10 to power of minus 3 into S. 0.6. शंट का वैल्यू पूछ रहे हैं. 600 into 10 to power of minus 3. This will be 3000 into 10 to power of 3 minus 20 into 10 to power of 3. इस तरह लिखेंगे हम. So this will be 600 by 2980. 60 by 298. 60 by 298. Now nearest value. So जब भी अब एकदम में situation demands, we can choose the nearest value. Let me calculate a 698. $60 by 298. 60 divided by 298. 0.2013. Nearest value. So I think nearest value यही है. 1 decimal पूछ रहे हैं. Conversion of galvanometer to ammeter. Conversion of galvanometer to ammeter. Conversion of galvanometer to the voltmeter. एक बार फॉर्मूलास रिवाइज कर लो, इट बी वेरी यूजफुल फॉर यू. सिंपल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं.
let me see it. This one, these are gallometer, conversion of gallometer to ammeter, conversion of gallometer to voltmeter. ये थोड़ा आपको याद रखना चाहिए. This is very important. No, this problem is based on the ray optics. Chapter name, ray optics. The subtopic name is spherical mirror. I am writing all the subtopics so that it'll be easy for you, because you can systematically revise things. Then, what is the question? Question यहाँ पे ऐसा है. Okay, a concave mirror of focal length f dipped into a liquid of refractiveness, the new focal length. हमें थोड़ा like a ray optics, just basics. This is nothing to do with the problem. यहाँ पे there's a concave mirror. ये वाला हो गया. This is the concave mirror. इसका focal length f, center of curvature. ये पोल हुआ. टोटल सेटअप को हम will immerse in a liquid. And हमें so some basic ideas are there. The focal length depends only on the radius of curvature. जिसका radius of curvature जो है, that only will determine the focal length. Okay, fine. Now ये तो focal length हुआ. Then इसको हम immerse करेंगे. The whole setup will be immersed. जब ये सेटअप को इमर्स करेंगे, इमर्स मीन्स विल ब्रिंग द लिक्विड. तो कंप्लीट सेटअप को मैं लिक्विड में इमर्स कर रहा हूं. तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? लाइक म्यू इज द मीडियम बोल रहे ना. दिस द म्यू. सो लाइक सम यहां से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होगा. जो बेंड है ना, इसका जो कर्वेचर बोलते हैं, लाइक जितना ये बेंड है, so this bending will not change. So the radius of curvature will not change. So radius of curvature remains same. So the focal length also remains same. And this will be your answer. Fine. So this is the like a simple theoretical thing of कोई like a not needed something high level पढ़ना भी जरूर नहीं है. like जितना आप theory जो पढ़ते हो, वो theory अगर आप सही तरह से रिमेम्बर कर सकते हो, then it's very easily manageable ना. JEE Mains. ये तो units and dimensions. The chapter name is the units and dimensions. Permittivity of free space, moment of inertia, velocity. तो पहले तुम एक काम करो, like velocity तो easy है ना, LT-1. So इसे now we can rule out this option, because option D का तो 4 रहना चाहिए. So this is ruled out. बाकी 3 में देखेंगे. Moment of inertia ले लेंगे. Moment of inertia equal to mr². तो इसका तो डायमेंशंस कितना होगा? m1l². t0. so इसका ऑप्शन सी, इसका डायमेंशंस होगा ml². बाकी दोनों ऐसा लगे ए एंड बी करने का जरूरत नहीं है. सो यू हैव टू लुक एट द सी. यहाँ पे हमें सी शुड बी 1 ना. सो सी इज 1 यहाँ पे मिल रहा है हमें. सी इज 1. डी इज 4. बाकी बचे सो ऑप्शंस यू नीड नॉट टू बॉदर. लाइक दिस विल बी लेंदी. अगर इसको आप डिराइव करना चाहते हैं, इट्स वेरी लेंथ. ऑफ कोर्स लाइक मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, लाइक B इक्वल टू म्यू नॉट. अगेन म्यू नॉट का वैल्यू सभी पता है ना. सो इसलिए व्हाट आई सजेस्टिंग, लाइक आपको ये दोनों पता है, लाइक दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सो नेचुरली तो आपको ये दोनों फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है. लाइक अगर ये ऑप्शन जो भी ये सेटिस्फाई हो रहा है,
बाकी ऑप्शंस इसको दो, जो नहीं सेटिस्फाई हो उससे आप पिकअप कर सकते हैं ना। फाइन। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इन एग्जाम यू हैव टू सेव टाइम, दिस दिस व्हाट रिक्वायर्ड। एग्जाम में आपको ऑप्शन पिकअप करने के लिए पूछ रहे हैं, तो ऑप्शंस आपको मिल गए हैं। नो नीड टू फाइंड आउट द इसका डायमेंशंस, टाइम लग जाएगा, यू कैन सेव टाइम। ओके बच्चों, हाँ। So this is the kids like a try to understand the smart way of thinking in exam, huh? Okay. Next question. The satellite is closer to Earth compared to Moon. Time period of Moon is shorter than the time period of satellite. थोड़ा ये like a gravitation time period of oscillation. So the topic is based on the gravitation. Gravitation chapter is asking about the time period of satellite. The time period of Moon is 27 days. Then period of satellite is. What is the formula? Formula. अगर अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इवन देन यू कैन मैनेज। दिस द अर्थ, दिस द रेडियस, दिस द सम पार्टिकल रिवॉल्विंग, तो इसका तो वेलोसिटी v होगा। देन विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू, यहीं पे सॉल्व करेंगे, एफ एस इक्वल टू जी एम ई एम एस बाय आर स्क्वायर। दिस विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स। इसका ओमेगा, दिस विल बी GME R cube. Time period omega equal to 2 pi by t. So therefore this will become 2 pi R cube by GME. यहाँ पे हम लेके मून मून लेके आएंगे। So एक रफ डायग्राम प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे दिस इज द मून एंड दिस इज द सैटेलाइट, एंड बीच में अर्थ है। इसका रेडियस आर एस, रेडियस ऑफ द मून, इसका आर एम ले लेंगे। इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा एन, इसका एंगुलर स्पीड कितना, ओमेगा एस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्चुअली विथ फॉर्मूला ओनली वी शुड मैनेज। ये वाला तो अर्थ है। देन there's a formula we derived. So time period of moon depends on what, 2 pi radius of moon by GME. Time period of satellite depends upon radius, ऑलरेडी यहाँ पे हम डिराइव कर चुके हैं। विल डिवाइड दिस टू, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट दिस विल बी आर एस बाय आर एम होल क्यूब। Then a satellite is 9 times closer to Earth compared to the moon. So RS will be कितना होगा, RS will be RM by 9. Substitute here. Then 27 days बोल रहा है time period of satellite. This will be how much, 27 RS by RM. RS by RM का वैल्यू कितना है, 1 by 9.
Then, so this will become 27 by 9 cube. 9 cube will become, this will be 27 outside, will be 1 day. So time period of satellite will be 1 day. Okay, fine. Calculations. So अगर अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो वेरी इजी है. डायरेक्टली यहाँ से आप कैलकुलेशन यू कैन मैनेज विद दिस कैलकुलेशन. डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हैं. देन ओके फाइन. थिंकिंग सो मच, इतना ज्यादा सोचने में लाइक इन एग्जाम इट टेक टाइम. तो इसीलिए अगर आप रिवाइज करोगे तो यू विल बी रेडी विद द फॉर्मूलास. इस तरह के फॉर्मूलास जब आप फॉर्मूलास याद रहे तो देन कॉन्सेप्ट अगर तो आपको आपके पास अच्छा है तो देन डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट इन एग्जाम विद दिस फॉर्मूला. देन यू कैन सी इन लेस टाइम. 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट में. तो इसके लिए आपको पढ़ना है. यू हैव टू रीड मोर नंबर ऑफ टाइम्स एंड आपको फॉर्मूलास याद रहना चाहिए. ओके बच्चों, सो विल किड्स विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Based on the EM-based chapter, in an electromagnetic wave of frequency 20 megahertz, value of electric field is 9.3, then the magnitude of magnetic field at that instant. The magnitude of magnetic field at that instant. So like a BC, it's very simple. B naught BC equal to E naught. Something of electromagnetism में EM waves में relation between B naught and E naught. This equation you can remember. Before Christ, like this, BC equal to E. B naught value, you are asking B naught value. C value will be 3 into 10 to the power of 8. E naught value is 9.3. Amplitude, very easy. ये वाला option. So this like a जो आप formula लिख रहे हैं, like what is this? The electric field and the magnetic field in EM wave will be in phase. ये तो in phase में होंगे. Then जब in phase में होंगे, then what is the basic condition is like the magnetic field and electric field are related by this particular equation. तो आप इसको इजी ऐसे याद रख सकते. बिफोर क्रिस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बी नॉट सी. क्वेश्चन मैनेजेबल. पेपर मॉडरेट पेपर, नॉट टफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Two charges are located. Question, let me read. Two charges plus 7 minus are located at. Find the electrostatic potential of the system. This is a very simple. Q1 minus Q2. Separation कितना U equal to K Q1 Q2 by X. K का value 9 into 10 to the power of 9. Q1 value 7. This is 4. X का value located at -7 and 7. So total distance will become 14. This is at -7. This is at +7. Total separation कितना हुआ? 14. 2 जा 7 जा 2 into 18 into -18 into 10 to the power of 9. Most easiest question. Just you should know the basic formula. अगर दोनों charges positive है तो then this will be positive. अगर unlike charges, if they are unlike charges, potential will be negative. If they are like charges, potential will be positive. See how simple things they are asking, and no need of
लाइक पैनिक, यहाँ पे डरने का कुछ भी नहीं. लाइक जितना होता है उतना पढ़ लो बस. There's a one simple strategy here. I don't want to trouble students with all unwanted stuff. Take notes, read, remember formula. जो भी पेपर तुम ले लो, attempt it. You can manage very confidently. This was the methodology. इसके लिए आप important questions, PYQ, most important PYQ, the top questions, best questions, सब garbage will not help you. जब तक आपको फॉर्मूला याद, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, बिना कॉन्सेप्ट बिना फॉर्मूला नो यूज. मोटिवेशन सुनना, ऑल दिस नो यूज. सीधी सीधी बात है, लेके पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो, या लेके यू रीड, यू गेट कॉन्फिडेंट. Sam, I'll come from offline coaching more, will directly interact with the student and we have to produce ranks. The instructions will be like this. Without reading, you don't get. No magic formula, no tricks, nothing will work out. If you read, then it's a confidence. Next question. So this concept is based on alternating current, the angular frequency when the current has maximum amplitude. This is something like question read कर ले तो series LCR circuit, inductance L, capacitance C, when the current has maximum amplitude, what is the current? So this was a source. So what do you mean by यहाँ पे resonance? Current has maximum amplitude circuit. Resonance, okay, this is the source. At resonance, when the frequency of source becomes equal to resonant frequency of circuit. What is the resonant frequency of circuit? 1 by 2 pi LC. Now यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? Angular frequency, omega is asking. तो पहले हम frequency find out करेंगे. L का value 100 into 10 to the power of minus 3. Capacitance value 1 into 10 to the power of minus 9. Ten to the power of 4 by 2 pi. Then angular frequency of the system is being asked. F equal to this much. Omega equal to 2 pi F. Angular frequency will be, let me check it, 10 to the power of minus 12. Yeah, fine. So A wala हुआ 10 to the power of 5. Calculation. So 2 pi F 10 to the power of 5 radians per second. इसको हम angular frequency बोलते हैं. The omega को ही हम angular frequency बोलते हैं. This topic, subtopic name is resonance, series resonance. And at resonance, A वाला curve इस तरह रहेगा. At resonance, current will be maximum. ये तो simple theory है ना? Just based on theory. This topic is based on the semiconductor physics. यहाँ पे दो डायोड है, लेके ए वाला एक डायोड है, then next अगला ए वाला डायोड है, then current through the cell, this current I is what we should find out. तो यहाँ पे देख लो तुम, पॉजिटिव टर्मिनल है, it is connected to p type, and this positive terminal again connected to p type of this diode. So I think there's a basic diode symbol. So when you can say both the diodes are forward bias, जब diode forward bias हो जाएंगे, then what is our circuit will be? Our circuit will be
जहाँ पे भी डायोड है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। तो current I, this is I, is asking this current. We'll call this is better I. का I कितना है? 5 by what's the value of I? I equal to 5 by 20, 1 by 4. So total current will be 2I, 2 into 1 by 4. So this will be 1 by 2, 0.5 ampere. जहाँ पे डायोड है, when the diode is forward bias, you have to replace with a short circuit. When diode is reverse bias, you should replace with an open circuit. I think this is the simple concept. अगर इतने याद रहे तो fine, you can manage. Just stereo, forward bias short circuit, reverse bias like a open circuit. What do you mean by forward bias? जब आप positive terminal of cell connected to p type is forward biased. इसके लिए तुम like लाखों खर्च करते बच्चे. I don't know, like nowadays coaching has become mafia where बच्चे जाके 2 लाख 3 लाख इसके लिए वेरी पिटी. आप बुक लेके अपने आप पढ़ सकते हो. दिस इज द फिजिक्स व्हाट वी हैव, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. फाइन. आई एम टॉकिंग अबाउट जेईई मेंस. जेईई एडवांस के लिए भी कुछ कुछ से लाइक ए सेल्फ प्रिपरेशन यू कैन मैनेज. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल वर्क डन फ्रॉम पाथ ए टू ई. ये तो प्रॉब्लम हुआ थर्मोडायनेमिक्स का. वर्क डन यहाँ पे हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ देख चुके हैं. ओके, वाई एक्सिस में प्रेशर है, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है. वर्क डन चाहिए. So then work done in the path AB. Work done in the path AB will be area under the curve P naught into 3V naught minus 2V naught. Work done in the path BC will be 0. Why 0? A तो हुआ isocoric, work done 0. And what about sir A वाला? This is the isobaric. In isobaric process, what is work done? Pressure into change in volume. Then बाद में ले लेंगे CE. See, A वाला तो isobaric cooling है. Then what is the work done? Again the pressure into pressure. Pressure का कितना है? 2P naught. Final volume V naught. Initial volume 3V naught. A तो P naught V naught हुआ, A तो 0 हुआ और A तो minus 4P naught. Net work done पूछ रहे. WAE. This should be equal to sum of. तीनों का algebraic sum कर लो. Thermodynamics, just basic idea, work done, isothermal process, isobaric process, isocoric process. इतने याद रहे तो fine, you can manage. And this topic is based on X-rays. Graph of frequency F of X-ray and atomic number Z of every nucleus is straight line in X-ray emission. So I think Moseley's law, you have to go for Moseley's graph of square root of frequency F and vector and atomic number of Z nucleus is straight line in X-ray emission. So I think it is will not pass through the origin, no, will be a straight line. The problem, the topic is based on Moseley's law. Root F equal to Z into A minus B. So I think a जो graph है now, it will not pass through the origin. F versus Z is not straight line. Root F versus Z is straight line. Root F versus Z should be straight line, not like F versus. So this will be wrong. This will be correct. So we'll pick up this one. Statement 2. Moseley's law. And the topic is, the chapter name is X-rays and a Moseley's law.
ये तो भी theory है. अगर आपको सा लगे मेरे को कुछ भी याद है, just Moseley's law याद है, enough. If you read all the theory, there's a platform for JEE Mains. theory पढ़ना है पहले. theory पढ़ के और थोड़ा basics अगर तुमको समझ लिए तो then formulas, then you can see very easy. यहाँ पे कौन सा भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप हाई लेवल थिंकिंग जरूरी है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. रीडिंग टीचिंग जाके कॉलेज जाओ, सुनो पहले, लेके अच्छी तरह से लेके जो भी टीचर पढ़ाते हैं सुनो, समझ लो वहां पे, देन नोट्स लिख लो. वही नोट्स को आप रिवाइज करो. मोर देन इनफ. एंड सॉल्व पीवाईक्यू. नो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन आरसी सर्क्यूट. यहाँ पे हमें कैपेसिटर है. फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट मीन जहाँ पे भी कैपेसिटर है हम इसको ओपन सर्क्यूट कर देते हैं. फिफ्टी नोट 10 नोट कैपेसिटर यहाँ पे. जब कैपेसिटर तो हम उसको ओपन सर्क्यूट करेंगे. द रीजन फॉर दैट एट टी को टू इंफिनिटी स्टेडी स्टेट बोले तो टी को टू इंफिनिटी एंड कैपेसिटर we have to replace with open circuit. So current will flow. यहाँ पे करंट का ये जो पाथ है इस तरह करंट फ्लो होता है सर्क्यूट में. तो वह करंट नाउ 5 minus 10i minus 15i 0 I equal to 5 by 25 1 by 5 एम्पियर. हमें तो यहाँ पे चार्ज पूछ रहे हैं. तो हमें ये वोल्टेज चाहिए. यहाँ से हम लूप इक्वेशन लिख देंगे VA माइनस 10i माइनस VB 0. ये तो KVL जहाँ पे आप स्टार्ट करते हो पॉजिटिव, जहाँ पे एंड करते हो नेगेटिव. देन दिस विल बिकम VAB इक्वल टू 10i 10 into 1 by 5 2 वोल्ट. तो देन यहाँ पे चार्ज कितना हुआ Q माइनस Q should be equal to C into VAB 8 into 10 to power of minus 6. VAB वैल्यू हमें 16 माइक्रो कूलम्स. इन माइक्रो में पूछ रहे, so our answer will be 16. This will be our answer. Steady state means T को to infinity and जहाँ पे कैपेसिटर it should be open circuit. देखो पेपर कितना ब्यूटीफुली दे आर आस्किंग. इट्स नॉट टफ. यहाँ पे भी मैं मॉडरेट भी नहीं, आई शुड नॉट से मॉडरेट ऑल्सो. जो भी आप क्लास में पढ़ चुके, जो भी सुन चुके, अगर उसको समझ लेने के बाद अगर आपको याद रहे तो द रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी बच्चे लाइक दे कुड नॉट डू बेटर इन दिस जेई मेंस, मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक आप रिवाइज करो. So in my channel, almost all the topics I uploaded, like into 1.5 और into 2 स्पीड में रखे. जितना भी theory है उतना रिवाइज कर लो. Once theory रिवाइज करके then formulas daily make 1 hour only formulas recollection. So बाद में solve PYQ. You can do better in the JEE Mains too. Next question. ये थोड़ा it is based on the kinematics projectile motion. A particle of mass m is projected at the angle 60 degree with horizontal. Initial kinetic energy is KE naught and kinetic energy at maximum height. I think this is like a, यहाँ से तो समझ लो पत्थर फेंक रहे हो. So at highest point इसका kinetic energy कितना है? So kinetic energy is telling here it is KE naught. यहाँ पे कितना kinetic energy? So we'll assume यहाँ पे speed u at an angle theta. यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे. यहाँ पे स्पीड कितना होगा u cos थीटा. horizontal speed remains same in projectile and at highest point vertical component will become zero. vertical component जो भी है वो zero हो जाएगा. then it will have only horizontal component. then इसका mass m assume कर लेंगे, mass of particle.
So initial kinetic energy कितना है? Ke naught should be equal to mu square by 2. At highest point kinetic energy इसका कितना है? M by 2 u cos theta whole square. इसको mu square कर देंगे. बाकी बचे तो क्या है? Cos square theta. Mu square value will become Ke naught. Theta value will be cos square 60 degree. This will become 1 by 4. Cos square 60, cos 60 will be 1 by 2, square of that 1 by 4. Like a, my बच्चों से like a, I'll question like इसके लिए आपको कोचिंग चाहिए क्या? Like do you need coaching? ये जो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चे like these are the basics, height, range, time of flight, the kinetic energy, potential. इसको छोड़ के तुम क्या प्रिपेयर करते हो? इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल. आप देखिए पिछले 6 साल से देयर नो क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन ऑन इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल. रिवर बोट वेरी लेस, रेन अम्ब्रेला वेरी लेस. अगर जब जो टॉपिक है वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं उससे पढ़ने से क्या फायदा है? तो यू शुड हैव द बेसिक आइडिया. जो भी आप रिविजन कर रहे हैं यू शुड, तुम्हें वो लाइक एसेंस पता रहना चाहिए. मीन्स लाइक जो एग्जाम लिख रहे हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आइडिया रहे तो यू कैन मैनेज व्हाट टॉपिक टू रीड. बिकॉज इतना सारा सिलेबस है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रेन अम्ब्रेला, रिवर बोट, जो भी बच्चे लाइक अगला शिफ्ट लिख रहे, रेन अम्ब्रेला, रिवर बोट, जो भी फॉर्मूला से दैट इज इनफ. नो नीड टू सॉल्व हायर लेवल प्रॉब्लम. Relative velocities, hardly anything asked in JEE Mains till that or past 6 years. What is very important? Motion in one dimension, gravity and projectile. Next question based on the errors. The topic is based on the errors. Errors significant figures like units and dimensions. So general physics का है. वहां से यहाँ question पूछ रहे. So we have the equation. The energy in system varies with position and time, where beta का value दे चुके हैं हमें. The percentage error in x and that in time. Find the maximum error in E at t equal to 5 seconds. इसका maximum error पूछ रहे. So what is E equal to? X to power of cube e to power of minus bt. इसका maximum error हमें calculate. Now इसको हम taking log on both sides. दोनों तरफ log ले लेंगे. log e, उसका simplification log x cube. So log e equal to 3 log x and minus beta t. Okay, fine. इसको हम differentiate करेंगे. When you differentiate this will become de by e 3 dx by x plus beta dt. तो जो भी हम find out करते हैं, we have to search for maximum possible error. So it will be इस तरह होगा, minus plus or minus beta plus or minus dt. तो इसको further simplification करने के बाद a plus or minus beta dt होगा. Percentage error, given that percentage error in x, इसका percentage error कितना है? 1.2. बीटा का वैल्यू कितना है? 0.3. and that percent error in t is 1.6. The maximum percent error in e at t equal to, इसका substitute कर लो, we'll get 6%. Fine, this will be your answer. So this is the idea. अगर आपको इक्वेशन इस तरह का है तो you have to take something log. जब भी पावर है तो इक्वेशंस में आपको पावर आ गए तो then you have to take the log, then the error will get multiplied by the power times. That's a basic concept.
This simple math based. Agla question based on the ray optics. This question is based on the ray optics. Then subtopic name is prisms. For a prism, the minimum deviation is equal to the angle of prism. The refractor is root 3, find the minimum deviation. What is the formula for minimum deviation? Mu equal to prism यहाँ पे इस तरह होगा. So जरा basic concept रिवाइज कर लेता हूँ. This is the prism. Then we are sending the ray. At minimum deviation, it becomes parallel to the base of the prism. Okay, ये तो angle of prism and जो minimum deviation हम बोल रहे हैं ना, this is the minimum deviation. This is the angle of incidence I1. This I2. This R1. This R2. Then there's a base. The refracted ray in the prism will be parallel to the base of prism. This is a basic concept. Okay, यहाँ पे हम what is the formula for minimum deviation? R1 plus R2 equal to A. R1 equal to R2. I1 equal to I2. Then directly वो सब derive करने के बाद हमें एक formula मिल जाता है. A plus delta minimum by 2 sine of A by 2. Mu value पता है root 3 sine. Minimum deviation is equal to angle of prism. So conditions क्या दिया यहाँ पे? A equal to delta minimum. ये जो है this is the formula. ये आपको ये याद रहना चाहिए. Fine. Then इसका value will be now like A only sine A by 2. Find that minimum deviation. अगर आप A find out करेंगे और A by 2 करेंगे, okay fine, both are same will be no. Sine A का expansion. Sine A का expansion कर लिए तो then we can replace that. Sine A का expansion will be 2 sine A by 2 cos A by 2. Then A वाला sine A by 2. So root 3 equal to 2 cos A by 2. So आपका angle होगा 60 degree. This will be our answer. Minimum deviation formula, prism, just basics. I think this paper is all about the formulas. जितना भी हम 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, देखो 17 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट 18 क्वेश्चन, ऑल अबाउट द फॉर्मूलास. कौन सा भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे देखिए इज आस्किंग समथिंग, यू हैव टू सोच के करना है. theory formula, अगर दे दोनों रहे तो दिस पेपर वेरी वेरी इजी है. Next question again is based on the gravitation. It's talking about the angular momentum. So यहाँ पे now there is a satellite revolving about the earth. ये वाला तो planet earth है. At a height r, this h is telling us. So the total radius of कितना हुआ? The radius of this will become 2r. यहाँ पे हमारा satellite है. M, mass of satellite will be ms. एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं, इसका अलग है. व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम? इसका तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा vs, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट हम जो भी बोलते हैं.
So then who will provide required centripetal force? The gravitational attractive force Fg equal to Gm ms 2r whole square. This will be ms v naught square r Gm ms 4r square. So इसका orbital velocity कितना हुआ नो? mv naught square by r gm by 4r. Angular momentum पूछ रहे हैं. What is the basic formula for angular momentum? Angular momentum about center of the earth to be equal to mass of satellite v naught s into radius. Radius of the orbit is 2r. So angular momentum of the satellite. Angular momentum formula mvr, and what is the radius? There's the radius 2r. Again, once again, basics. ms. What is the orbital speed? Orbital speed is gm by 4r, 2r. ms gm r. 2 will come outside. 2. This is r. Then this will become mass of satellite gmr. The angular momentum of satellite above the center of the earth. At a height r above the surface. So the total it will be yeah 2r. Here I missed it. Radius of orbit is 2r. No, so this will become 2r. This will be 2. This will become 2. यहाँ पे थोड़ा calculation गलत हुआ. This will be radius. Radius will be 2r. No, centripetal force. So the value will be, answer will be 2. ये भी simple formula बेटा. So जब भी हम height यहाँ पे बोलते हैं, so the height is measured from the surface of the earth. This will be surface, no? जब भी हम height बोलते हैं ना, so that height is taken from the surface of the earth. अगला क्वेश्चन लेंगे. ये तो थोड़ा based on the surface tension concepts. यहाँ पे हम वाटर सरफेस ले लेंगे. ये सब यहाँ पे पानी है और द वाटर व्हाट यू कैन कॉल. बबल कहाँ पे है? Find the pressure difference of air bubble of radius 2 centimeter form 20 centimeter below an open surface. यहाँ पे बबल है, इसका रेडियस r and this is depth h. This is air and this is water 1 and 2. तो यहाँ पे प्रेशर कितना हुआ? P2 इक्वल टू P0 प्लस रो GH. P2 का प्रेशर. देन ये तो एयर बबल है. सो एयर बबल मीन्स कितना सरफेस रहेगा? ओनली वन ना. एयर बबल का तो फ्री सरफेस ओनली वन. सो देयरफॉर P1 इक्वल टू P2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन बाय R. P2 का वैल्यू कितना? प्रेशर एट डेप्थ रो GH. प्रेशर डिफरेंस ऑफ द एयर बबल. below an open water surface and atmospheric pressure. यहाँ पे surface tension value भी दे चुके हैं. P1 minus P2 is asking. So rho H. इसको क्या? So he is asking the pressure difference. यहाँ पे pressure difference बोले तो this is called as pressure difference. A वाला this one. So the delta P is what? Rho GH. इसका value find out करेंगे. Rho value will be 10 to power of 3.
9.8 into 20 centimeters, 20 into 10 to the power of -2. So this will be 9.8 into 2 into 10 to the power of 2. 2 8 are 16, 1 carry, 2 9 are 18, 19.6 into 10 to the power of 2, or 0.196 into 10 to the power of 4. इसको हम एक काम करेंगे 0.0196 into 10 to the power of 5. The nearest will be 0.02. This will be our nearest option. ये जो क्वांटिटी है इसको ही हम प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं. This one is what we'll call pressure difference. The topic is based on surface tension and also the fluid static, the static pressure. So small ideas. Next question. This is based on the nuclear physics. Statement 1. For the binding energy per nucleon is almost constant. The nuclear force is a long range force. No, the nuclear force is a short range force. Nuclear force is a short range force, not long range force. They all are wrong. The binding energy per nucleon is almost constant. Yes, we can put it around 8.3, it will come. This will be correct statement. Statement 2 is wrong. Statement 2 is wrong. So इसमें क्या होना? Only statement 1 is correct. Binding energy per nucleon concept, nuclear physics में. There's a horizontal pipe having fluid density flowing through it at cross section भी velocity सर. यहाँ पे हम एक पाइप ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे velocity VA and इसका cross section C and B. यहाँ पे cross section SC, यहाँ पे cross section SB, यहाँ पे fluid velocity this one, यहाँ पे pressure P and PB. Correct relationship. Yeah, so I think problem based on the Bernoulli's theorem and the equation of continuity. Then pressure at A, kinetic energy at A, plus potential energy at A should be equal to pressure at A, kinetic energy at A, potential energy at A. This topic is based on fluid dynamics, Bernoulli's theorem. Pressure at A, kinetic energy at A will be rho VA square by 2. Potential energy is 0. Both are at same level. हम इसको 0 ले लेंगे. Pressure at B, kinetic energy rho VB square. This is 0. Find the correct relationship. PA minus PB. VA minus VB पूछ रहे हैं. VA square. इसको हम readjust कर लेंगे. VA square minus VB square. इसका तो 2 by rho PB minus PA हुआ. Option 3. Bernoulli's theorem. ये तो purely Bernoulli's theorem. अगर आपको Bernoulli's theorem याद रहे तो then what is the basic formula? Potential energy, pressure energy per unit volume will become equal to static pressure at that point. Then kinetic energy per unit volume will become rho V square, and A and B are on same horizontal level. Potential energy will assume it to be 0. Pretty sure. I think this is the simple formula. अगर क्लास में बैठे हो और Bernoulli's theorem ये पढ़ चुके हो और Bernoulli's theorem आपको पता है तो फिनिश हो दिस क्वेश्चन. नो कॉन्सेप्ट, नथिंग.
If a rod of tension 7 produces extension x1, tension of 5 Newton produces. Find the tension that produces extension 7x minus 5 2. We'll do one thing. ये तो elasticity chapter है. 7 Newton. This is a rod of length है. यहाँ पे हम 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर चुके हैं. एक्सटेंशन कितना है? x1. A tension of 5 Newton produces extension of x2. Find the tension that produces extension 7x minus 5x2. Hence modulus equal to 7 by area of cross section A by elongation x1 by L. Same Hence modulus equal to 5 by A elongation x2 by L. इसे हम क्या करेंगे? 7L by AX1. x1 है यहाँ पे 5L by x2 है. So 7x1 equal to 5x2. 7x2 minus 5x1. Find the tension that produces extension. Now, यहाँ पे थोड़ा हम इस तरह ले लेंगे. नो कितने एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन का वायर पूछ रहे. नो एक्सटेंशन वैल्यू कितना है? 7x minus 5. इसके लिए कितना टेंशन अप्लाई करना है? तो अगेन दिस विल बी इक्वल टू t by x इक्वल टू 7x1 minus 5x2. तो एक्सटेंशन का वैल्यू कितना है? नो x इक्वल टू वैल्यू कितना लेना है? 7x1 minus 5x2. सो t by x कौन सा? तो एक इक्वेशन ले लेंगे. x का वैल्यू कितना है? 7x1 minus 5x2. यहाँ पे x1. x2 का वैल्यू कितना है? x2 वैल्यू वी कैन राइट x2 एज 5x by 7. इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. फाइव x1. लेट मी एडजस्ट दिस. तो मेरे को स्पेस चाहिए कैलकुलेशन के लिए. यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे. ओके फाइन. Yeah, no, we'll calculate. Equal to 7 by x1. x1 तो एलिमिनेट हो जाएगा. So t by 7 minus 25 by 7 equal to 7. तो इसका वैल्यू हुआ 9. 49 minus 25 equal to 1. t equal to 49 minus 25. 24. There's a concept. अगर तुमको ये थोड़ा बेसिक आइडिया यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन अगर आपके पास है तो देन यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. This is the requirement. Okay, fine. So like a paper, sir, like a, sir, can you say anything about paper? पेपर मॉडरेट भी नहीं. इसको तो हम इजी बोल देंगे. मॉडरेटली वेरी इजी. मॉडरेट एंड फॉर्मूला बेस्ड. अगर यहाँ पे आपको 60 मार्क्स अगर स्कोर करेंगे तो
it will come easily to 99 percentile. आपको 65 भी कर दो. The paper is very easy, moderate and formula based, or you can say like a very moderate. Easy भी बोल सकते हैं, and purely formula based. This is the only paper I have seen इस shift में like a purely formula. जितना भी formulas तुम याद कर लोगे उतना benefit है. JEE Mains is all about formulas. आप एग्जाम जा रहे हो तो आपके पास फॉर्मूला चाहिए. Requesting all the remaining session students like revise formulas जो भी time है, like no need to solve any problem, no benefit, formulas if needed. Okay बच्चों, like this is about the basic thing you have to really, and the complete paper, the total, the paper analysis में we can put it like cutoff will be around 193 is what I got the information. अगर आपके पास 193 मार्क्स आ गए तो total this will be 99 percentile for 3 subjects, PCM. A little bit you have to do scoring here more. Okay, बाकी बच्चों से जो भी like sessions है, you have to prepare well. Okay बच्चों, like kids, like we had a discussion on the JEE like mains 2025-23 January evening shift or shift 2. The paper was purely formula based. आप जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं purely formula based. आप देख चुके हैं ना, लाइक जो भी फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वहाँ पे फॉर्मूला लगा के तुमको आंसर आ. इट्स रियली वेरी गुड पेपर. बल्कि आपको थोड़ा बहुत स्कोर ज्यादा करना पड़ता है, 65 मार्क्स अगर 99% का फिजिक्स में, एंड टोटल पेपर परसेंटाइल इज आल्सो अराउंड 192 इज सम करीब बोल रहे हैं, लाइक फॉर 99 परसेंटाइल. सो पेपर इजी, यू हैव टू स्कोर मोर. So advantage, this is nothing is a paper tough. Okay, fine. Somehow you manage some problems, you get 99% for lower marks. Paper easy, your cutoff marks will increase. So I think no need to bother. No, आपको डरने का कुछ भी नहीं है कि either paper easy या tough हो, finish हो, जितना होता है उतना problem कर लो. But हर एक session में you have the more memory based question this time. The more memory based question, very important. Okay, बच्चों, like we'll end up. Okay, the coming shifts will I'll upload the paper. Thank you very much. Thank you for great support. All the best for remaining session students.